Mahendra Pratap Singh, who is a petitioner for conducting the survey in the Shahi Idgah Mosque, is with us on the broadcast in Mathura. We also have Khaliqur Rahman, who is a political analyst. Mr. Rahman, coming to you first. The Hindu side is very happy and expectedly so, rightly so, but the Muslim side says they are going to move a higher court. How do you see this order vis-a-vis the Muslim community? Anything that you've picked up from within the community? What are the sentiments? Must be disappointed. Yeah, definitely. You know, the Muslim community is quite disappointed. But this is the initial verdict of the district judge, which definitely would be challenged before High Court, and if need be, will be taken up to the Supreme Court, because this is, in fact, something which is in violation of the POW. That is Places of Worship Act 1991, and the case was about its maintainability. Yeah. But the district judge felt that it could not be maintained, and then they are allowing the Shringa to go on actually. So now I think there is nothing left with the Muslim side but to approach the higher courts. So this is what I think they'll be doing now, and they will be going through the judgment, which in fact even I have seen that while it was being read out on your channel. Yeah. And there's nothing much left, especially with the Muslim community lawyers, but to approach the higher court. But Rahman sir, why is it that you can't fight this case on the merits? I mean, the argument of the Hindu side is. Let me finish my argument. I'll give you the time to respond. The argument of the Hindu side is that there was the puja of Ma Shringar Gauri, which was happening after 1947, and there were various parts of the now masjid complex which were actually temples. They have been encroached upon by the masjid community, and it doesn't fall under the purview of the Places of Worship Act 1991. That argument has been entertained by the trial court. Now the hearing would be on the merits of it. See, what happened is, because when the POW Act 1991 came into existence, at that time it was very clearly decided that whatever the religious character of the mosque or the temple, or whichever the religious place was there as on 15th of August 47, that would remain. But here, because there is a way that you can see that character has been disturbed, or the character has been modified or converted. So now it was all about allowing the women's petition for doing the puja there. But in any case, because Rahman sir, please stay with us on the broadcast. I want to bring in other guests, Mahendra Pratap Singh, who's also with us on the show. Mr. Singh, an initial victory for the Hindu side. The Muslim side, as expected, will take it to a higher court. But looks like that the initial hurdle has been done away with. The Hindu side is very, very happy. How do you see this entire litigation moving ahead? इसमें स्थिति आज बिल्कुल क्लियर हो गई है, और शुरू से ये लोग हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष के लोग जो पक्षकार थे। आज कोर्ट ने स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया, और हम पहले दिन से ही कहते रहे कि जितने भी एविडेंसेस है, चाहे सिंबल एविडेंसेस हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो, सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष में। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। हमने वेरी फर्स्ट डे से कहा था, और ये लोग लिंगर ऑन करने के उद्देश्य से, सिर्फ इसमें क्या है कि प्रोसीडिंग किसी तरह से चले नहीं, इनकी प्रोसीडिंग लिंगर ऑन होता रहे। यही ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में करते रहे। हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि ये लोग इसको केस को नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सिंगल एविडेंस नहीं है इनके पास में। तो ये जान करके वहां भी बनारस में भी हिंड्रेंस पैदा किया इन्होंने, और मथुरा में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। यहाँ भी कमीशन को लेकर के कोर्ट कमीशन गया, हमने कहा कोर्ट कमीशन भेजा जाना चाहिए। यहाँ भी 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई इन्होंने, और बार बार एक ही चीज कहते रहते कि प्लेसेस वर्सेस ऑफ 1991 का जो एक्ट है वो प्रभावी नहीं है। हम पहले दिन से कहा हमने कि भाई वहां पर लिटिगेशन चलते रहे, और जब लिटिगेशन चलते रहे पहले दिन से, तो प्रभावी कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि उसका 4A सब सेक्शन देखेंगे तो उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूअस चलेंगे तो उपासना अधिनियम 1991 वहां अप्लाई नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 का भी हमने हवाला दिया है यहाँ मथुरा कोर्ट में,
और हमने कहा है कि जो प्रॉपर्टी 100 साल से पुरानी प्रॉपर्टी है उनमें ये अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो एनिशिएंट प्रॉपर्टी है, मॉन्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब ये 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा था, ये तो ये बात ये भी जानते हैं इस बात को। और ये लुटेरे आए थे वहां से, लुटेरों ने आकर तोड़ दिया लूटने के उद्देश्य से, देश की संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से। तो ये कुछ कहीं अप्लाई नहीं करते हैं ये लोग। और वेरी फर्स्ट डे से हम कहते रहे, हमने मथुरा की भी कहा था, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, कि वहां पर कोर्ट कमिश्नर जाना चाहिए, स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसका वहां वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, वहां की डायमेंशन हो। और 1968 के जो कंप्रोमाइज है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे थे मथुरा के बारे में, 1968 का जो कंप्रोमाइज जो गलत है, वो इलीगल है, हमने उसी को चैलेंज किया कोर्ट में। जी, वो तो चैलेंज में है। मैं यही आर्गुमेंट रहमान साहब के पास लेना चाहती हूँ। Mr. Rahman, this has been an argument even in the Ram Janmabhoomi case, and I've seen it in the Supreme Court, that often the Muslim side is accused of or perceived to be delaying the matter, and the impression that goes is that you don't have enough evidence to really back your case. Why is it, and answer this question, why is it that you're shy of a videography? Why is it that you are opposed to a court-appointed commission? These are not extra-constitutional or extrajudicial ways. If legally a matter this sensitive can be settled, then both sides should be welcoming it. When this issue was already settled by an enactment of a law in the parliament, then why the subsequent actions actually? So this is what it is actually. For example, the parliament actually sealed these issues, barring Babri Masjid, which was there, that is barring the Ram Janmabhoomi issue, that is in 1991. Then subsequently, because BJP in fact is going as per their agenda, that Ram Janmabhoomi, Kashi and Mathura. So I think they are now on their agenda number 2. So I mean, there is no need for any kind of videography, or there is no need for any kind of photography. But in this case, Rahman Saab, in this case, the petitioners are saying that we are well within the purview of the 1991 Act. Even after 15th August 1947, there was puja happening of Ma Shringar Gauri. It was eventually stopped. Artificially, the walls were constructed in the Wuzu Khana. All this was done allegedly and illegally by the Mosque committee. These are the allegations they are making, and they're saying 1991 Act to beech mein aata hi nahi hai isme. No, because there is a very, it's clearly established that this could not have been, should not have been maintained by the district judge. But anyway, because since the district judge has already given its verdict, so now the Muslim lawyers will go to High Court to put forward their case. So, and as per the which is very clearly said that as per Order 7, Rule 11, this should not have been maintained. But anyway, because since this is the verdict of the district judge, so we all have to respect. But there is again a legal recourse available to that. Yes, you have the legal. The Muslim side has the recourse available. They have the right to move a higher court. They have the right to exhaust all their legal options. But we are having a broader legal and a political debate here. And I'm going back to my other guest who continues to be with us on the broadcast, Mahendra Pratap Singh ji. The argument that the Muslim side is making is that this is an agenda of the BJP. They are creating these problems. This has been settled by the 1991 Act. मेरा आपसे सवाल ये है कि जो POW Places of Worship Act 1991 की बहुत निंदा की जाती है, उसको चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कई साल से चैलेंज है वो। उस एक्ट में ऐसी क्या खराबी है कि बहुत सारे हिंदू पक्षकार उस एक्ट से खुश नहीं है, उस कानून से खुश नहीं है? और क्या आपका बेसिस है ये कहने का कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या असंवैधानिक है? देखिए, उपासना अधिनियम 1991 की जब हम बात करेंगे जी, तो उपासना अधिनियम में 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति रखने आने का प्रोविजन किया गया। भाई 15 अगस्त 1947 की स्थिति रखने का क्या औचित्य बनता है? 4.5 लाख मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिया आप लोगों ने, हैं? आप कह रहे हैं कि साहब ये लागू होना चाहिए। भाई क्यों लागू होना चाहिए? हमारे सब आराधना स्थल आपने तोड़ दिए, हमारे सब पूजा स्थल आपने तोड़ के मस्जिद बना लिए। आज हम इस एक्ट की सहारा लेकर के आप उसको अपनी गलत चीज को सही साबित करना चाहते हैं। अरे आपको तो इसका पश्चाताप करना चाहिए कि 4.5 लाख मंदिर हमारे तोड़े गए और इतने धैर्य के साथ हम इतने सालों तक बैठा रहा हिंदू पक्ष, तो कम से कम आपको अपनी गंभीरता का परिचय देते हुए आपको कहना चाहिए कि भाई आपके मंदिर आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी सपोर्ट लेकर के हमारे जो मंदिर है उनको कन्वर्ट किया गया। आज हम अपना अधिकार रख रहे हैं, कोर्ट से मांग कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। बीजेपी का एजेंडा बताते हैं, भाई बीजेपी का एजेंडा का हिंदू अपने हक की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सी बुराई है? आप तो इलीगल चीज को लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1670 में तोड़ा गया था मंदिर, मथुरा का जन्मभूमि का। बनारस